course, sharing it with other people is always a helpful part of de-stressing our system. Because paradoxically, it's a vicious cycle. कंसीव नहीं हो रहा है या कोई दिक्कत हो रही है तो हमारा स्ट्रेस बढ़ता है और ये स्ट्रेस कहीं पे भी हमारी फर्टिलिटी जर्नी में हेल्पफुल है. Whether they're on social media platforms like Facebook, there's a small close community that would be talking amongst each other. We must reach out to those groups. We must talk to people. I'll give a word of caution here that a lot of times, a lot of negative information. नहीं है कि ये पॉजिटिव आ गया तो बेबी में कोई एब्नॉर्मैलिटी है. ये टेस्ट बेसिकली इसीलिए किया जाता है कि बच्चे में कोई बनावटी खराबट या डाउन सिंड्रोम, ट्राइसोमी जैसी कोई बीमारी ना हो. Hi friends, welcome to Fertility Fridays. I'm Dr. Shweta Goswami and we are here to help you welcome hope to overcome your fertility issues. So let's talk today about how to deal with emotional stress concerning fertility. एक important aspect of dealing with emotional stress is that we should and we must involve our friends and family. It is a stressful journey by the time you conceive. So please don't try and do it alone. Please involve your spouse. Please involve your friends and family. Because it is an emotionally challenging phase that you're going through. Talking to people, understanding what others are going through. Because you know what happens a lot of times, हमें लगता है सिर्फ हमारे साथ हो रहा है. I'm the only one having this trouble. That's not how it works, right? We don't even know that how many people are probably suffering like us, maybe even worse than that. Speaking to people, hearing about their experiences always helps. I've often seen कि unfortunately अगर miscarriage वगैरह होता है तो लोग आके कहते हैं मेरे साथ ही क्यों हुआ है. And then as a doctor we have to tell them that there's a 5 to 7% chance of that happening with anybody. And therefore please don't think you're the only one going through this. Unfortunately, nature is imperfect when it comes to fertility. We have a lot of egg and sperm issues. We have a lot of embryos which are not normal. That is the reason why it takes anybody a couple of months. And also when the pregnancy happens, हो सकता है वो एकदम completely genetically normal नहीं हो, and then also a miscarriage can happen. Knowing all this actually helps us probably be better prepared for what we're looking up to. And here talking to friends and family, in my opinion, is very helpful because you get to know of other people's experiences. You understand you're not alone. And of course, sharing it with other people is always a helpful part of de-stressing our system. Because paradoxically, it's a vicious cycle. कंसीव नहीं हो रहा है या कोई दिक्कत हो रही है तो हमारा स्ट्रेस बढ़ता है और ये स्ट्रेस कहीं पे भी हमारी फर्टिलिटी जर्नी में हेल्पफुल नहीं होता है. वो और हार्मोनल इम्बैलेंसेस और बाकी प्रॉब्लम्स क्रिएट करता है. सो बीइंग रियलिस्टिक अबाउट आवर सक्सेस रेट्स आई थिंक इज वन ऑफ द फर्स्ट स्टेप वी नीड टू डू टू नो विच वे वी आर गोइंग. The other thing that's very important is aajkal to there is online, there is Google, there's a lot of help that's available. We have to actually reach out. There are excellent support groups, whether they're on social media platforms like Facebook. There's a small close community that would be talking amongst each other. We must reach out to those groups. We must talk to people. I'll give a word of caution here that a lot of times, a lot of negative information also comes out of these groups because, probably people who've already conceived don't really have the time to look at those groups anymore. So you do get a lot of negative information from there. You'd probably hear of more people, who've not conceived, even had IUI, IVF failures. So we should take that in our stride. We should understand that there's probably a bias there, but still, there is so much to gain from other people's experiences. Why should we just learn from our own experience? So I would say that please do reach out to these support groups. Do go to these online platforms without a negative bias, building up in your head and take help. If required, there's nothing wrong with even looking at a therapist or somebody to help you out. In fact, a fertility counselor is supposed to be a very important part of every IVF or fertility center. So it's not there just for no purpose. It's because we understand that dealing with the emotional aspects is half the journey that we're talking about in fertility treatments. So please do go out, reach out to people, reach out to online groups, and don't do and try and do all this alone because learning from people's experience would always be a very helpful part here. The other aspect that I'd really like to talk about is that we, especially I'd say about women here, if we are most negligent about something, it's probably ourselves. We have to look at self-care, even if to the point of, somebody saying that maybe we're being self-centered about it. I think we have to go out there, we have to pamper ourselves.
having the best mental health is going to be the most important and critical thing no matter what we do. Now, that is true for life in general, but I think also a lot when you're going through a lot of turmoil in your mind because of the fertility aspect of your life and whatever time that it's taking. So please involve yourself in enriching yourself, whether it is physical development, mental development, whether it is yoga, meditation, stress relieving techniques. Kindly take out time, maybe at least 30 minutes a day. If we actually come to it, ये सारा टाइम हम सब निकाल सकते हैं. अभी हम कहते हैं हम बहुत बिजी हैं, हम सुबह से शाम तक काम कर रहे हैं, फिर हम इसके बाद घर का भी काम देख रहे हैं. वी आर सो बिजी. But actually, if we introspect, we'll realize that we all can take out 30 to 40 minutes if it really comes to that. So it's my earnest request, please look at self-care, please look at self-development, and also look at, making a mental goal that this is where I am going to, work on myself, and we must give ourselves and our body that much time. Please do work on that aspect. Adding to that, focus on your hobbies, So, as I said, we have to, always consider fertility as a journey. It is something that will evolve. It will happen when it has to. And rather than focusing on, okay, I should conceive in the next 1 or 2 months, I would say take it as a journey. And during that part, while you're working on your self-development, please work on your hobbies. Whether it's, you like swimming, you like reading books, you like, some kind of sports, you like music. I mean, everybody knows that there is nothing less, de-stressing the body than music. So please work on those aspects. Take out time for yourself so that when we work on these hobby developments, definitely, scientifically we know that it's the endorphins which are causing a lot of stress. So if we, bring them down, we are going to definitely work on our hormonal aspects very well, and it will help us in conceiving faster. So it's my earnest request that we must work on that, please. Last but not the least, I would also like to say that, we must check and introspect that, is there any chance that we might be having some kind of, depressive feelings? Symptoms of that is that, you feel the feeling of nothingness. You don't really feel like eating well, sleeping well, doing anything. Now, if you think that you could have any symptoms, it's a wrong taboo probably that we have in our society, that anybody who says that I might have mental some issues, I might have depression, it is really looked down upon. I don't think so. If we can have a physical ailment, if we can have blood pressure issues, we can have thyroid issues, we can also have slightly anxiety or depression issues. There's no harm in talking about it. I think there's absolutely no harm in reaching out to a psychologist or a psychiatrist. Talking to people helps. Taking short-term medications if required helps. Please look out for those signs and symptoms and do reach out for help if needed. Continuing with Fertility Fridays, an important aspect is that we also want to clear out any doubt that anybody will have. So, ek karke, I'll also take some of the questions that we've got from our users, and you can also add on to any further query that you have. We'd be more than happy to answer them. So, one of the users has asked, "Ma'am, मेरी dual marker test positive आया है, अब मुझे कौन सा टेस्ट कराना होगा? Please reply." सो देखिए, मैं बताना चाहूँगी कि ये ड्यूअल मार्कर टेस्ट जो होता है, ये प्रेगनेंसी में किया जाता है और प्रेगनेंसी के 3rd मंथ में, टिपिकली 12 वीक्स पे किया जाता है. ये जो टेस्ट होता है, ये स्क्रीनिंग टेस्ट होता है. स्क्रीनिंग टेस्ट बाय डेफिनेशन मीन्स जरूरी नहीं है कि ये पॉजिटिव आ गया तो बेबी में कोई एब्नॉर्मैलिटी है. ये टेस्ट बेसिकली इसीलिए किया जाता है कि बच्चे में कोई बनावटी खराबट या डाउन सिंड्रोम, ट्राइजोमी जैसी कोई बीमारी ना हो. तो ड्यूअल मार्कर अगर पॉजिटिव आता है तो अकेले ड्यूअल मार्कर का कोई सिग्निफिकेंस नहीं है, साथ में और चीज़ों को देखा जाता है. वाइफ की उम्र कितनी है, NT-NB स्कैन जो हुआ है वो किस रेडियोलॉजिस्ट ने किया है, वो कितने एक्सपर्ट हैं, वो NT सही में थिक है कि नहीं, और ये जो ड्यूअल मार्कर है, ये अकेला ब्लड टेस्ट की वैल्यू है कि NT-NB साथ में लेके किया है. अगर उस अल्ट्रासाउंड पे गॉड फॉरबिड कुछ बहुत ग्रॉस एब्नॉर्मैलिटीज मिलती हैं तो सीधा कंफर्मेटरी टेस्ट. सो आई एम रिपीटिंग, ये ड्यूअल मार्कर एक स्क्रीनिंग टेस्ट होता है. फिर हम कहते हैं हमें कंफर्मेटरी टेस्ट करना है. स्क्रीनिंग टेस्ट का मतलब है अगर 1 in 200 का भी रिस्क है तो 200 महिलाओं जिनमें ये टेस्ट पॉजिटिव आएगा उनमें से किसी एक में दिक्कत होगा. ठीक है, तो हमारे को तो फर्दर कंफर्मेटरी टेस्ट करना है कि सही में ये है कि नहीं है. जो बाकी 199 आउट ऑफ 200 है उनको तो फर्दर टेस्ट कराने की भी ज़रूरत नहीं है. तो हम लोग आगे अगर कुछ ज़्यादा दिक्कत आती है तो एमनियोसेंटेसिस जैसा टेस्ट कराते हैं, अगर नहीं तो NIPT जो एक ब्लड टेस्ट है वो किया जाता है. तो ये हमारे को हमारे केस बाय केस बेसिस अपने स्पेशलिस्ट से एक बार डिस्कस करना होता है कि हमें क्या करना है. बट जो मैं टेक होम मैसेज देना चाहूँगी वो ये है कि अकेले डबल मार्कर का कुछ मतलब नहीं है. हमें फर्दर NIPT, एमनियोसेंटेसिस ऐसे कंफर्मेटरी टेस्ट के हिसाब से ही फर्दर देखना चाहिए कि बेबी में कोई दिक्कत तो नहीं है.
सेकेंड क्वेश्चन एक रूपा विश्वास जी के यहाँ से आया है उसी के ऊपर कि फर्स्ट ट्राइमेस्टर स्क्रीनिंग मेरी डॉक्टर ने करने को बोला है, मेरा 3rd मंथ रनिंग है, पर मुझे बहुत डर लग रहा है, क्या मुझे कराना चाहिए? तो देखिए रूपा जी, मेरी तो यही एडवाइस रहेगी कि ये यूनिवर्सल स्क्रीनिंग है। यूनिवर्सल मतलब पहले ज़माने में हम कहते थे कोई बहुत ओल्ड है, 35 एंड बियॉन्ड है, करें, बट आज की डेट एंड एरा में हम कहते हैं प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर। अगर कोई दिक्कत है तो हमें अर्ली प्रेगनेंसी में पता चलना चाहिए। तो ये डबल मार्कर स्क्रीनिंग, फर्स्ट ट्राइमेस्टर स्क्रीनिंग प्लीज़ कराएं, डरने की कोई बात नहीं है। 99% ठीक ही आता है। 1% कोई दिक्कत है तो ये पहले ही पता चल जाए, वो बेहतर है। इसके अलावा ओडिडिया क्रिएशन ब्लॉगर ने लिखा है, वेरी गुड एक्सप्लेनेशन मैम, इजीली अंडरस्टूड, नॉर्मल डॉक्टर्स आर नॉट टेलिंग द डिटेल्स, ओनली आस्किंग फॉर टेस्ट। थैंक्स मैम। थैंक यू सो मच फॉर योर काइंड वर्ड्स। और भी आपके कोई भी क्वेश्चन हो प्लीज़ पूछते रहिएगा। अलिया कियानी पूछ रही हैं, टुडे वाज माय IUI, आई एम फेसिंग लोअर एब्डोमिनल पेन एंड स्पॉटिंग, इज इट नॉर्मल? सो अलिया देखिए, लोअर एब्डोमिनल पेन तो नॉर्मल हम कंसिडर करते हैं यूजुअली, क्योंकि वो दिन आपका ओवुलेशन का डे होता है ना। IUI टिपिकली उस दिन करते हैं जिस दिन एग रिलीज होता है, तो उस दिन तो लोअर एब्डोमिनल पेन होने को हम एक बहुत हेल्दी साइन मानते हैं। उसको साइंटिफिक भाषा में मिटलश्मर्श कहते हैं। तो हम कहते हैं वो तो हो रहा है, वो ठीक है। जहाँ तक स्पॉटिंग का सवाल है, बहुत माइल्ड स्पॉटिंग कभी कभी IUI प्रोसीजर के टाइम जब हम सर्विक्स को क्लीन कर रहे होते हैं तो हो जाता है। आपको अगर लगता है कि IUI आसानी से हो गया, कोई बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट या पेनफुल नहीं हुआ, तो वी डोंट थिंक स्पॉटिंग इज अ बैड थिंग। अगर बहुत एक्सेसिव स्पॉटिंग होता है तो येस, मे बी वी नीड टू सी कि ठीक है कि नहीं है। ठीक है, आई होप दैट आंसर्स योर क्वेश्चन। अगर आपको हमारे क्वेश्चन आंसर सेशंस या वीडियोस इंटरेस्टिंग लगे हों तो प्लीज़ इसको लाइक एंड शेयर जरूर करिएगा। प्लीज़ सब्सक्राइब टू आवर चैनल जीवा फर्टिलिटी चैनल, जहाँ पे हमने इनकॉर्पोरेट किए हैं a lot of these videos which we think and hope you will find useful in your fertility journey. Thank you.